बच्चों, अब हम फिज़िक्स में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ये लॉ जो है बेसिकली दो स्टेटमेंट्स पे बेस्ड है, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट is the absorption of heat from a reservoir and the complete conversion of the heat into work। कि ऐसा कोई प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है जिसमें जितनी हीट रिजर्वायर से एब्जॉर्ब की जाए उसको कम्प्लीटली कन्वर्ट किया जा सके वर्क में। ऐसा पॉसिबल नहीं है, 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है किसी प्रोसेस में भी। नॉट ऑल हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क इन अ साइक्लिक process, or it is impossible for any device that operates in cycle and to receive heat from a reservoir and produce a net amount of work equivalent to absorbed heat. Okay. Second is Clause's statement. No process is possible whose sole result is the transfer of heat from a colder object to a hotter object. अब क्लॉसेस का स्टेटमेंट कहता है कि ऐसा कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसका रिजल्ट क्या हो, हीट का ट्रांसफ़र फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी। स्पॉन्टेनियसली क्या पॉसिबल है? हमेशा हीट का ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी। If you want to transfer heat from the colder object to the hotter object, you need to supply energy or you have to do work on that. Heat transfer always occur from hotter to the colder object unless energy is supplied to reverse the direction of heat flow. Heat transfer can only occur spontaneously in the direction of temperature decrease. We cannot reverse the direction without doing any work. It is impossible to construct a device that operates in a cycle and produces no effect other than heat transfer from a cold body to a hot body. अब आप बोलेंगे कि रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, तो बच्चों रेफ्रिजरेटर में हमको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ हीट को मूव कराने के लिए। ओके, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे सेकेंड लॉ को। सेकेंड लॉ ने ही ये एक्चुअली नेगेटिव स्टेटमेंट्स थे दोनों ही। सेकेंड लॉ ने ही आपको एंट्रोपी की टर्म दी। उन्होंने बताया कि कोई भी प्रोसेस जो है वो फर्स्ट लॉ अगर उसको परमिट भी कर देता है किसी प्रोसेस को एनर्जी के कंजर्वेशन के बेसिस पे, तो भी एक अलग टर्म है एंट्रोपी, दैट ऑल्सो डिसाइड्स ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। हमेशा जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हैं उसमें एस्केलेशन ऑफ एंट्रोपी या इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी होता है। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, बढ़ती है। The first law of thermodynamics is the principle of conservation of energy. Common experience shows that there are many conceivable processes that are perfectly allowed by the first law and yet are never observed. For example, nobody has ever seen a book lying on a table jumping to a height by itself, but such a thing would be possible if the principle of conservation of energy were the only restriction. It means there is some restriction. The table could cool spontaneously, converting some of its internal energy into an equal amount of mechanical energy of the book, which would then hop to a height with potential energy equal to the mechanical energy it acquired. But this never happens. Clearly, some additional basic principle of nature forbids the above. तो सेकेंड लॉ एक्चुअली क्या करता है? इट फॉरबिड्स सम ऑफ द प्रोसेसेस विच आर एक्चुअली अलाउड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। इट फॉरबिड्स द लॉ, इवन forbids the processes, some of the processes, even though it satisfies the energy conservation principle. This principle, which disallows many phenomena consistent with the first law of thermodynamics, is known as the second law of thermodynamics. उसको counteract करने के लिए बनाया ये। The second law of thermodynamics gives a fundamental limitation to the efficiency of a heat engine and the coefficient of performance of a refrigerator. In simple terms, it says that efficiency of a heat engine can never be unity, है ना।
This implies that heat released to the cold reservoir can never be made zero. For a refrigerator, the second law says that the coefficient of performance can never be infinite. This implies that external work W can never be zero. The following two statements, one due to Kelvin and Planck denying the possibility of a perfect heat engine, and the another due to Clausius denying the possibility of a perfect refrigerator or heat pump, are a concise summary of these observations. तो ये स्टेटमेंट्स आपको पहले ही मैंने बता दिए हैं, और आप वो जो रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल और हीट इंजन का प्रिंसिपल आपको अलग टॉपिक्स में पढ़ाया गया है.